to start our examining bind variable, right? To start about the bind variable. The bind variable are created in the environment, also called host variable. Create with the variable keyword used in SQL statement and plsql block. Assessed even after the plsql block is executed. Reference with the preceding clone. Then value can be output using the print command, right? Required when using SQL Star Plus and SQL Developer, right? Bind variable कौन देखा? Bind variable are variable that you create in a host environment. For this reason, they are sometimes called host variable. Bind variable टा मोर जो क्रिएट हुए सेटा होस्ट एनवायरनमेंट रे मोर क्रिएट हुए जोटी होस्टिंग हुए सेठी तमरो बाइंड वेरिएबल टा क्रिएट हुए एंड ताकू बेले बेले ताकू आंती होस्ट वेरिएबल भी कुआ जाए. Use of bind variable are created in the environment and not in the declarative section of plsql block. Therefore bind variable are accessible even after the block is executed. When created, bind variable can be used and manipulated by multiple subprograms. They can be used in SQL statement and plsql block just like any other variable. These variable can be passed as runtime value into or out of a plsql subprogram. A note is a bind variable is an environment variable but is not a global variable. Environment variable और global variable भितर फरक अछि. Global variable जोट पहले सेठी ताको एक्सेस कर पाए, बट एनवायरनमेंट वेरिएबल माने सही एनवायरनमेंट रे केवल तमे एक्सेस कर पाए, माने होस्टिंग रे केवल तमे एक्सेस कर पाए. बुझला? Creating bind variable. To create a bind variable in SQL developer, use the variable command. For example, declare variable of type number and varchar2 as follows. Variable return code number, then variable return message varchar2, right? It also moro bind variable lo declaration. Variable dabo tame na dabo mane keyword ta dabo, then return code jodi tame number jodi korcho tal number directly dabo, jodi tame character jodi kiछि message korcho tale return message, right? Viewing values in bind variable, you can reference the bind variable using SQL developer and view its value using the print command. For example, you can reference a bind variable in plsql program by preceding the variable with the clone. For example, for the following plsql block creates and use the bind variable b underscore result. The output resulting from the print command as shown in the below the code. Variable b result number dala what a bind variable declare kala. Begin select salary into 12. Salary column ro jeti value achi into 12 karibo. Plus nvl commission underscore pct comma 0 into b result. jaha sabu aschi mora b result re jaiki store hobo. From employee where employee id equal to 144. जहारो एम्प्लॉय आईडी 144 थिबो तार सैलरी रे इनटू 12 करिवो तार कमिशन बार करिवो एंड स्टोर करिवो कोठी मोर बाइंड वेरिएबल रो नेम रे मोर स्टोर करिवो, राइट? देन एतिकी लिखला पारे तापर तमे जते प्रिंट करिवो, प्रिंट कमांड देकी जते बाइंड वेरिएबल रो नाटा पास कर दबो, इट मींस कोन तम आउटपुट शो करिवो. तो एडी देखो एनोनिमस ब्लॉक कंप्लीटेड बी अंडरस्कोर रिजल्ट आउटपुट दला 30,000. बुझला? If you are creating a bind variable of the number type, you cannot specify the precision and scale. However, you can specify the size of the for character string. An Oracle number is stored in the same way regardless of the dimensions. The Oracle server used the same number of bytes to store 7, 70, and 0.0734. Right? It has a range. It is not practical to calculate the size of the Oracle number. Dependency from the number format, so the code always allocate the byte needed. With character string, the user
has to specify the size of that the required number of byte can be allocated. बुझला? Then it is variable b underscore employee underscore salary number, right? Bind variable go declare kala. Begin select salary into salary ta moro store hobo kouthi moro bind variable na re store hobo from employee where employee id equal to 178, right? 178 ro employee id jaha thibo ta salary ta moro kouthi store hobo bind variable store hobo, right? तो से देखा दला 87,000 बोली बुझला ता salary टा देन आउट देछि ताको से प्रिंट करछि एठी हला प्रिंट करछि बोले एटा आउटपुट तमो शो करछि बुझला select first name last name from employee where salary equal to b underscore employee salary, right? एठी जो आउटपुट टा आसिला राइट एठी केता आसला 7,000 टा कोठी आसे नेला सैलरी रे सेही सैलरी रो सेही सैलरी रे जो एम्प्लॉय अछंती तार फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिट्रीव करबो तो एठी से देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिट्रीव कला 7,000 रिलेटेड जो एम्प्लॉय अछंती तार फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम तुमको एठी शो बुझला एटा होची बाइंड वेरिएबल रो काम बुझला referencing bind variable as started previously. After you create a bind variable, you can reference that variable in any other SQL statement or plsql program. In the example, b underscore employee underscore salary is created as a bind variable in the plsql block. Then it is used in the select statement that follows. When you execute the plsql block shown in the slide, you see the following output. The print command execute b underscore employee salary, then 7,000, then taro result moro first name last name, then taro first name last name show kala बुझला using auto print with bind variable. Auto print केमती तमरो हुए केमती bind variable सेटा देखो variable तमरो डिक्लेयर कला bind variable गोटे डिक्लेयर कला b underscore employee underscore salary, right? तार टाइप देला numbers. Set auto print on, right? Auto print ता तमरो on हम auto print ता जते on करूछो it means कोन गोटे पॉप अप माने तुमको आउटपुट जो आसीबो एटा तो पर आसीबो गोटे पॉप अप मेनू तुमको शो करिवो प्रथमे त एक्जिक्यूट करबा को गोटे पॉप अप मेनू शो करिवो सेठी तमरो से देखे दबो तमरो एम्प्लॉय नंबर ता जहां भी एठी देइछि एठी कोन देखि डिक्लेयर करछि गोटे वेरिएबल डिक्लेयर करछि सेठी हमरो एम्प्लॉय नंबर ता देइछि राइट एम्प्लॉय नंबर ता कोन से मते एठी शो करिवो 178 कहि बुझला ओके करले एठी आड लेक्स माने कोन एठी तो आड एम्प्लॉय नंबर एटा होछि वेरिएबल पर एम्परसेंट वैल्यू मु डायरेक्ट वैल्यू पास करनी ना वैल्यू ता दबो हला तो ए जो वैल्यू ता 178 जो दिया हला ए वैल्यू ता कोठी आसीबो मोर v एम्प्लॉय नंबर को आसीबो राइट जेता तमे ओके करिवो तापर से आउटपुट ता शो करिवो माने मु कदली पत्र रे खाइबा आ गोटे मु तुमको कहबी जे पेपर प्लेट नियो एका जिंस बट एटा डिफरेंस होय कदली पत्र रे खाइबा गोटे पेपर प्लेट रे खाइबा बुझला तो मु डायरेक्टली एठी 178 देथिले ही थान राइट जेहेतु गोटे ऑप्शन अछि सेट ऑटो प्रिंट ऑन जो ऑप्शन टा अछि सेटा ऑन करले तुमको गोटे पॉप अप मेनू शो करो सेठी तमे वैल्यू टा पास करो वैल्यू पास करले ओके करले से वैल्यू को नै कि जो एग्जीक्यूशन टा हबो तापर आउटपुट टा शो करिवो तुम बुझला using auto print with bind variable, use the set auto print on command to automatically display the bind variable used in a successful plsql block. For example, in the code example, the bind variable named is b underscore employee underscore salary is created and auto print is turned on, right? A variable named v underscore employee number is declared and substitution variable is used to receive user input जोरा कि मतलब कहली यूजर जो इनपुट ता दबो पॉप अप मेनू रे से इनपुट ता मोर जाई कोड स्टोर हबो मोर वेरिएबल भीतर स्टोर हबो v underscore employee number, right? Finally, the bind variable and temporary variable are used in the executable section of the plsql block. When a valid employee number is entered,
In this case, 178, the output of the bind variable is automatically printed. The bind variable contains the salary for the employee number that is provided by the user. बुझला? Bind variable सरला. एगुड़ा सब आम प्रैक्टिकल करबा हला प्रैक्टिस देछि एगुड़ा सब प्रैक्टिकल करबा डिटरमाइनिंग वैलिड आइडेंटिफाई हैं सेटे परसेंटाइल टाइप टिके कोइ देउ परसेंटाइल टाइप एट्रिब्यूट होछि कोन जो वेरिएबल ता तमे डिक्लेयर करिवो सेटा इन द सेंस ऑफ तमे माने plsql डिक्लेयर करो या फिर sql डिक्लेयर करो sql तो तमरो ताकू वैरायटी टाइप रो डिक्लेयर करिया पड़छि बट परसेंटाइल टाइप एट्रिब्यूट है परसेंटाइल सिंबल थ्रू माने तमे जो वैल्यूटा पास करो सेटा पर्टिकुलर सेक्शन को असाइन हो बोले परसेंटाइल टाइप मोर दिया जाय बुझला फॉर एग्जांपल जेमिति धरो मोर एबे एबे होची मते असाइन कराई छि ओरेकल राइट ऑनलाइन जे तो एटा होची मोर पर्सनल टाइप मो ऑनलाइन रे ओरेकल क्लास ही करी जदि फिजिकल हे थांदा ताले पांचटा पिला बसथने पांचटा पिला डिफरेंट कोर्स कथा ने मु जाकी उठी समस्त घंटे आधा घंटा पढ़ी था राइट एटा होची डिफरेंस बुझला एटा होची पर्सनल टाइप रो बुझला एटा हमें मंडे दिन स्टार्ट करबा राइटिंग एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट एटा सरला परे तमर प्रैक्टिकल स्टार्ट बुझला ए थर्ड चैप्टर ता सरला परे तमर प्रैक्टिकल ता माने डेवलपर केम प्रैक्टिकल करा जाय केम स्टेटमेंट लिखा जाय सेटा तमर स्टार्ट क्लियर ओके थैंक यू